Welcome to all here in the session of mathematics. In today's session, we'll discuss types of relation. Okay. In the previous episode, already we have been discussed what is relation, definition of the relation, what is the domain, range of the relation, how could you write the tabular form of the relation, and also we have discussed the inverse of the relation. Now we'll take the empty relation, void relation, reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, all those types of relation. So let us start with the empty relation. This one is the first type relation. Okay. So you can say this one as void relation also. Void. V-O-I-D. Void relation. Okay. This one is also called void relation. Now we'll write what is the definition. Then we'll take some examples of the empty relation. You see, a relation are defined on the set A, defined on the set A is called an empty relation on A if relation R is equal to phi, which is subset of A cross A. On the set A means the domain set is A and codomain set is also A. Okay. If you take one example, then you can easily understand. We'll take one example. Let A is equal to, suppose the set A is equal to only elements 3 and 5. Now you can construct A cross A, that is nothing but the 3, 3, 3, 5 and 5, 3, 5, 5, isn't it? Now if you have to ask, write a relation R is the order pair xy such that x square is equal to y. That means here square of the first order element is equal to the second order. You see 3 row square 3 key? No. 3 row square 5 key? No. 5 row square 3 key? No. 5 row square 5 key? No. So there is no element inside this relation. That's why this one is empty relation. Empty relation means there is no relation likewise in the set of A cross A. Okay. That's why this one is called empty relation. So this can be written as phi. And also you can say this one is void relation. Okay. Now I'll take the universal relation. That is, you can write the definition of this universal relation. That is, a relation are defined on the set A, defined on the set A is called the universal relation, is called the universal relation on A. On A means what? The domain set is A and the codomain set is as well as A. If the relation R is equal to total the Cartesian product of two sets, that is A and A, that is A cross A is equal to if R, then you can say R is the universal relation. Now we'll take some notes. The first note, you can write the empty relation and the universal relation. The empty relation and the universal relation, and the universal relation are known as trivial relation, if the cardinality of A is equal to M. Cardinality of A means number of elements inside the set A. You can write n of A, that is number of elements present inside the set A. Okay. Then the number of elements in the empty relation is 0, and the number of in the universal relation is m square. Why m square? Because the cardinality of A cross A is equal to m into m, because the number of element is inside the set A is m, so that is m square. Okay, since this one happened, so total universal set is the cardinality of A cross A. The number of elements present inside the universal set is nothing but the number of elements present inside the set A cross A. That's why the number of universal relation is m square.
Now I will take next relation, that is identity relation. Third type of relation is identity relation. Now we'll take first the definition, then we'll take some examples. A relation on the set A is called an identity relation if the relation set R is equal to set of order pair AA such that A belongs to A. That means for each element of the set A, AA should be inside the set R. Okay, otherwise you can't say this one is the identity relation. That is, if every element is related to only to itself, then you can say identity relation. Okay, we'll take example. If A is equal to set of 3, 5, 7, that means you have to form the identity relation on the set A. That means you have to form A cross A, isn't it? That means domain set is A, codomain set is also A. So if one relation R is equal to 3, 3, the number, each of the elements should be related to itself, and 5, 5 and 7, 7, only these elements are there inside the relation, then you can say this one is a identity relation. But if you will take another example, R1 is equal to 3, 3, 5, 5, only these two are there, this one is not an identity relation. Why? Since 7, 7 is not belongs to R1. Each element 3, 5, 7, 3, 3, 5, 5, 7, 7 should be there inside the relation for it to be identity relation. Otherwise this one is not an identity relation. Another one you see, R2. Suppose 3, 3 is there, 5, 5 is there, 7, 7 also there, and another relation 3, 5 is there. So you see 3, 3 is there, 5, 5 is there, 7, 7 is there, but other than 3, 3, 5, 5, 7, 7, another element is there 3, 5. This one is not related to itself. That's why this one is also is not an identity relation. Do you follow or not? That means identity relation रे सबुबले निज सहित निजे केवल सेतिकी थिवो सबुडा थिवा दरकार. इट 3, 5 अछि, इट लाइक द since here 3, 5 belongs to R. That's why this one is not an identity relation. R2 is not an identity relation. Okay, all of you clear about the identity relation? Now we'll take reflexive relation. Now we'll take fourth type of relation, that is reflexive relation. Reflexive relation. These are all special type of relation. This one is one of the special type of relation. Reflexive relation, when a relation is said to be reflexive. Now we see, first we'll take the definition. A relation are defined on the set A is said to be reflexive, is said to be reflexive if for every element or for each element, you can say for each or for every element A belongs to A, that implies AA belongs to R. So many students are confused about these two relations, reflexive and identity relation. Now I will take some example to clear what is the difference between reflexive relation and the identity relation. You see, let A is equal to, suppose the element 3, 5, 7 only. Here you see, suppose one relation is there and given their elements looks like 3, 3, 5, 5, 7, 7, 3, 5, 5, 3, all these are given. What is the definition for reflexive relation? Here you see, for each A belongs to A. That means A ro pratyek element pai, A ro pratyek element mane 3 pai, 5 pai, 7 pai, AA should be belongs to R. That means A thibo ta chhada au je thau ki no thau
आमर सेथिरे किछि जाय आसे नाही बुझी परलो ना नाही बुझी परलो सो फर्स्ट विल टेस्ट for 3 whether is there or not inside the relation R1 for 3 is there that's why this one is satisfied for each element telling so again you will take 5 for 5 is there for 7 is there that means satisfied but what about 3 5 and 5 3 80 3 5 5 3 थाउ कि न थाउ हमर एति कि अछि माने रिफ्लेक्सिव हे जो किंतु आइडेंटिटी रे कोन थिला आइडेंटिटी रे only these elements are there only 3 3 5 5 7 7 are there otherwise जदि अधिका अछि ताले भी हबोनी कम थिले भी हबोनी a relation on the set A is called an identity relation if the relation R is equal to set of only AA माने 3 3 5 5 7 7 only थिबो आउ किछि नथिबो जदि कम थिबो भी हबोनी आइडेंटिटी जदि बेसी थिला आउ किछि आकु छाडी कि अलगा एलिमेंट किछि अछि ताले भी आइडेंटिटी हबोनी जोटा कि रिफ्लेक्सिव केस रे हबो रिफ्लेक्सिव केस रे कोन हबो 3 3 अछि 5 5 अछि 7 7 अछि ता माने रिफ्लेक्सिव हे गला ता छाडी कि आउ जे थाउ कि न थाउ नथिले भी एटा हबो थिले भी एटा हबो ताले ऑल द आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव but vice versa is not true so you can write here one note all the identity relation are reflexive whereas the converse is not true. Note 2 also every universal relation clearly reflexive relation that is you can write the universal relation you can write here the universal relation defined on the set A is clearly a reflexive relation I mean कौन बुझिलो all the identity relation are reflexive but the converse is not true that means identity relation टा reflexive हो किंतु सबु reflexive relation identity हबो बोली किछि माने नाही but the universal relation defined on the set A every universal set is the reflexive relation now we'll take next type of relation that is symmetric relation first we'll take the definition that is a relation are defined on the set A is said to be a symmetric relation if A related to B that implies B related to A if A related to B that implies B related to A then only you can say this relation R is said to be a symmetric relation otherwise not that is whenever A B belongs to R the order pair A B belongs to R that implies BA should be belongs to R okay that means when AB order pair of AB belongs to R that implies BA belongs to R so now we'll take one example to clear your idea about the symmetric relation suppose one relation is there R is a relation on the set A is equal to 1 2 3 okay R is equal to we have written R is equal to 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 you see whether the relation R is symmetric or not according to the definition those order pairs AB belongs to R their opposite that is inverse their inverse means BA should be belongs to R here you see 1 1 1 1 रो इनवर्स टा किए उल्टे दियो 1 1 अछि सेठी से निजे हबो सेटा अच्छा 2 1 सेकंड ऑर्डर पेयर किए 2 1 2 1 रो उल्टा टा किए 1 2 देखो खोजो कोठी अछि ना नहीं यस इज देयर दैट मींस 2 1 पाई तार उल्टा टा अछि 1 2 अछि नेक्स्ट देखो 1 3 1 3 रो उल्टा खोजो 1 3 रो इनवर्स टा अछि ना नहीं इनवर्स 3 1 is there again 1 2 1 2 roll data 2 1 is there 3 1 roll data 1 3 is there that means this one is symmetric relation but what about the reflexive एटा reflexive जदि पचारियो reflexive हबनी काहे कि reflexive हबनी तमे देखो 1 2 3 पई reflexive पई कोन दरकार 1 1 2 2 3 3 थिबा दरकार एठी 1 1 खाली अछि 2 2 नाही कि 3 3 नाही
So it is not reflexive but symmetric. R is a symmetric relation. आ गोटे रिलेशन मु तैयार करूची देखिला सपोज R1 देखिला गोटे सपोज 1 1 अच्छी 2 2 भी अच्छी 1 2 अच्छी 1 3 अच्छी 3 2 अच्छी 2 1 अच्छी एतिक अच्छी देखिला देखो 1 1 रोलटा से नीचे अच्छी 2 2 रोलटा से नीचे अच्छी 1 2 रोलटा खोज 2 1 इज देयर 1 3 रोलटा नहीं ता माने गोटे कट खाइला माने आउ देखिबा दरकार नहीं. So is not symmetric, is not a symmetric relation. Okay, would you follow or not? Symmetric relation. ताले symmetric relation बुझी गलो पूरा बुझी गलो. symmetric relation का को जाय symmetric relation माने जीए थिबो तार उल्टा थिबो जदि तार उल्टा नाही जनकर भी उल्टा नाही ताले सेटा symmetric relation हबनी. 1 1 2 2 3 3 इटा सिमेट्रिक ना नहीं देखो इटा सिमेट्रिक 1 1 रोलटा सी नीचे 2 2 रोलटा सी नीचे 3 3 रोलटा सी नीचे ता माने इटा को जे सेल्फ सिमेट्रिक नीचे नीचे रो उल्टा नहीं कर इटा ताको कोन को जीवो ताको को जे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन माने प्रत्येक एलिमेंट रो ए बी बिलोंग्स टू आर दैट्स इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर दैट्स इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी देन यू कैन से दिस रिलेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. ये बड़े रिलेशन थिले एटा सिमेट्रिक हबो आ तार भी आउ गोटे ना अछि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हला. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन केते बेले ना देखो एटा देखो आर विषय देखो एटा खाली सिमेट्रिक रिलेशन R2 भी सिमेट्रिक रिलेशन किंतु गोटे स्पेशल टाइप रो सिमेट्रिक रिलेशन. एठी कोन ना 2 1 रो उल्टा आउ गोटे एलिमेंट अछि 1 2 एठी 1 3 रो उल्टा आउ गोटे एलिमेंट 3 1 अछि किंतु एठी 1 1 रो उल्टा से निजे अछि 2 2 रो उल्टा से निजे अछि 3 3 उल्टा से निजे अच्छी सेल्फ सिमेट्रिक छड़ा आउ कोनोसी एलिमेंट नांती. दैट्स व्हाई R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन. फर्स्ट यू विल राइट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन. Symmetric relation. Also you can say this one is anti-symmetric relation. So it are गोटे anti-symmetric relation एठी गोटे मु लिखि दउची. Symmetry रो गोटे स्पेशल टाइप रो symmetric relation अछि सेटा होची anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation कोन? A relation R is defined on the set A. On the set A is said to be an anti-symmetric relation. जहाँ सिमेट्रिक रिलेशन लिखाई छि सेम लिखा हबो गोटे एक्स्ट्रा जिंस लिखा हबो. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर सच दैट you can write such that or then लिखिबो then A is equal to B होतिबो. If B belongs to R and BA belongs to R then A is equal to B. A is equal to B होतिबो. So this one is one of the special type of symmetric relation that is called anti-symmetric relation. खाली symmetric relation कुह तुमे किंतु anti-symmetric relation गोटे extra type रो relation जानी था. Okay. सो सिमेट्रिक विषय जानी गलो. सिमेट्रिक माने जी थिबो तार उल्टा थिबो सब बळे हला सिमेट्रिक मन रखिला. अच्छा रिफ्लेक्सिव ना नहीं एटा जदी तुमको पछारिबो कि रिफ्लेक्सिव वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव तो कह यस काहे कि ए सेट रे देखो प्रत्येक एलिमेंट पई ए सेट रो एलिमेंट गुडा के थिला 1 2 3 1 रो 1 1 अछि ना नहीं यस 2 रो 2 2 अछि ना नहीं यस 3 रो 3 3 अछि ना नहीं यस. सो R2 इज ए reflexive relation. तुम पचारो whether this one is identity relation तुम भी कहबो yes why 1 पई 1 1 अछि 2 पई 2 2 अछि 3 पई 3 3 अछि. so this one is also one of the identity relation. R2 टा identity हला reflexive हला symmetric हला anti symmetric भी हला. देखु छ केते प्रकार हे गला ए गोटे रिलेशन reflexive हला identity भी हला symmetric भी हला anti symmetric भी हला. Transitive relation. Now we'll take 7 type of relation, that is transitive relation. First we'll take definition, then we'll take some example to understood or clear idea about the transitive relation. So first we'll write a relation R on the set A is said to be transitive relation
If ABBC belongs to R, that implies AC should be belongs to R. Okay, ABBC देखो बीटा सेम अच्छी एमती दुटा को एलिमेंट नब a special type of relation ABBC that means first element ro second order pair second element ro first order pair should be same. If same सेटा को ओमिट कर दबो बीटा को ओमिट कर देले रहिला कोन हम पाकर AC ताले AC order pair रहथिबो ताले AC belongs to R, then only you can say this relation R is said to be an transitive relation. Okay, now we'll take one example. Suppose the set A is equal to the elements are 1 2 3 and 1 relation R is defined by the order pair 1 1 is there, 1 2 is there, 2 3 is there and 1 3 is there. Only those elements inside the set R. You have to check whether the relation R is transitive or not. अच्छा ट्रांजिटिव केस रे आमे वर्तमान देख साइलुनु एबीबीसी एई भली टेस्ट नबा को एलिमेंट रो सेकंड ऑर्डर आ गोटे एलिमेंट रो फर्स्ट ऑर्डर सेम हेइथिबो तले ताकू ओमिट करिकि एससी शुड बी बिलोंग्स टू आर हेले आमे जानिबा सेटा ट्रांजिटिव अदरवाइज नॉट. ओके अच्छा देखिला वर्तमान फर्स्ट एलिमेंट टा गुनियो फर्स्ट एलिमेंट रो की अछि देखो फर्स्ट एलिमेंट रे कोन अछि 1 1 अछि फर्स्ट यू राइट 1 1. अच्छा 1 1 रो फर्स्ट एलिमेंट रो सेकंड ऑर्डर टा की अछि सेकेंड ऑर्डर टा यू सी 1 अच्छी ताले खोजो कहार फास्ट ऑर्डर 1 अच्छी एठी देखो 1 अच्छी एठी देखो 1 अच्छी ताले दीटा एलिमेंट संगे तार टेस्ट हो ताले देखो फर्स्ट टेस्ट कली 1 2 एटा देखो यार सेकेंड ऑर्डर यार फास्ट ऑर्डर ओमिट कर देली ताले रहिला मो पाखरे कोन 1 2 देखो 1 2 1 2 अच्छी ना नहीं निजे तो अच्छी सियोर अच्छी हियर इज 1 2 ताले अच्छी 1 2 बिलोंग्स टू आर लिखले बुझी पाइलो आ गोटे टेस्ट अच्छी 1 1 संगे 1 1 संगे यार सेकंड ऑर्डर वाला 1 आ गोटे एलिमेंट अच्छी यार फर्स्ट ऑर्डर होची 1 दैट इज 1 3 तले कथा संगे 1 3 बुझी परछो तो टेस्ट रो पैटर्न कोन ना ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर दैट सिम्प्लाइज इफ ए सी बिलोंग्स टू आर देन यू कैन से आर इज ट्रांजिटिव. अच्छा एटा टू टेस्ट करियो गोटे एलिमेंट पई टेस्ट करियो नी सब एलिमेंट पई से बडी टेस्ट करियो. जे देखो हम गोटे गोटे कर टेस्ट कर दोची 1 1 1 3 then you will omit 1 1 should be omitted, then you will write for which one that is 1 3 that implies 1 3 tale 1 3 अछि ना नहीं हां निजे अछि ता माने एथिर कोन जानलो कंक्लूजन फ्रॉम दिस we conclude that if we take self symmetric 1 1 2 2 3 3 it is obvious case. Why obvious case? कारण 1 1 संगे 1 2 नेलो पाइलो कोन 1 2 1 1 संगे 1 3 नेलो पाइलो कोन 1 3 सेमती 2 2 संगे जीए नब से या पाइबो जोठी 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 एगुडा सब अछि सेम अछि फर्स्ट ऑर्डर जा सेकंड ऑर्डर से या ता पई ट्रांजिटिव टेस्ट करा जायनी सेटा ऑब्वियस केस हुई तेनो एटा तथापि मु टेस्ट कर देखै देली सेटा तुमे किंतु आ टेस्ट करबा आवश्यक नाही. तापर एलिमेंट देखो जोगुडा अलगा थिवो हियर यू सी 1 2 नाउ विल टेक सेकंड ऑर्डर एलिमेंट 1 2 1 2 दर देखो 1 2 एलिमेंट रो सेकंड ऑर्डर टा के 2 now we'll check कहारो फर्स्ट ऑर्डर 2 अछि देखो इठी अछि फर्स्ट ऑर्डर 2 आउ को एलिमेंट रो फर्स्ट ऑर्डर 2 नुहे ओनली 2 3 रो फर्स्ट ऑर्डर होछि 2 सो देयरफॉर इठी लिखिबो 2 3 लिखिबो 2 3 लिखिलो तले ए दीटा सेम हे गला ए बी बी सी बी सेम हे गला तले रहिबा कथा कोन एसी तले एसी देखो 1 3 अछि ना नहीं यस 1 3 belongs to r लिख पहले हियर इज 1 3 अलगा गोटे एलिमेंट है ना 1 2 2 3 2 2 कैंसिल कर देलो 1 3 अच्छी यस 1 3 बिलोंग्स टू सैटिस्फाई कर गला ता पई या पई ताले वर्तमान सेकंड एलिमेंट रो टेस्ट भी सरी गला. अच्छा थर्ड एलिमेंट रो टेस्ट आस यदि गोटे एलिमेंट रो टेस्ट भी फेल्युअर होउची ताले ट्रांजिटिव होबनी ताले एठी देखो चेक करबा 2 3 पई 2 3 रो सेकंड ऑर्डर टा के 3 फर्स्ट ऑर्डर देखो कोठी 3 नाही ता पई ताले या पई टेस्ट ही नाही सो देयरफॉर किछि आ करिवा दरकार नै टिक मारो जहाँ पई टेस्ट नहीं किछि करिया दरकार नै हला. अच्छा एठी देखो 1 3 रो फोर्थ एलिमेंट 1 3 तार सेकंड ऑर्डर टा के 3 वर्तमान फर्स्ट ऑर्डर कोठी 3 अछि को एलिमेंट रो फर्स्ट ऑर्डर 3 देखो को एलिमेंट रो फर्स्ट ऑर्डर भी 3 नै ताले या पई भी टेस्ट नहीं तेनो एटा टिक मार दियो आ किछि दरकार हलानी आगो पई टेस्ट दरकार हलानी कारण ताको पई टेस्ट ही नहीं हला केवल यारी पई टेस्ट थिला 1 2 पई थिला 1 1 पई थिला हम टेस्ट कर देलु
ताले मेनली 1 2 पई हम टेस्ट करिया दरकार 1 1 पई टेस्ट करिया दरकार नहीं काहे कि सेटा ऑब्वियस केस हो ट्रांजिटिव निश्चय हो ताले 1 2 2 3 टेस्ट कोन कलो 1 2 2 3 नलो 2 2 ओमिट हे गेलो 1 3 बिलोंग्स टू आर सो देयरफॉर द रिलेशन आर लिखियो सो द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव अच्छा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री कथा चिंता कलो टिके चिंता कर दियो रिफ्लेक्सिव हमर एलिमेंट गुडा कोन अछि ए सेट रे 1 अछि 2 अछि 3 अछि ताले 1 1 रहबा दरकार 2 2 रहबा दरकार 3 3 रहबा दरकार रिफ्लेक्सिव पे 1 1 खाली अछि 2 2 नाही कि 3 3 नाही तेनु एटा रिफ्लेक्सिव भी नो अच्छा सिमेट्रिक ना नहीं देखिया 1 1 रो उल्टाटा रहबा दरकार 1 1 रो उल्टा की से निजे अछि 1 2 रो उल्टा की 2 1 नाही देखो ताले सिमेट्रिक भी नो देखो रिफ्लेक्सिव हलानी सिमेट्रिक हलानी बट ट्रांजिटिव हला ओनली ट्रांजिटिव बुझि पाइलो आ गोटे नेक्स्ट एग्जांपल नवा दि तीनटा एग्जांपल नेले तुम बुझि पारिबो let A is equal to set of 4 6 8 okay and R is a relation defined by R on A 4 4 6 6 8 8 then 4 6 6 4 4 6 6 4 6 8 8 6 6 8 this one is one of the nice example you see for the first order element I am test kariya whether the relation R is transitive on the set A तामने A set रो element 4 6 8 4 6 8 भीतर relation करी गोटे R relation लिखा हिची elements are given हमें transitive पाई नवा कोन मु कहितली 4 4 6 6 8 8 जो सेम एलिमेंट थियो फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर जोटी थिबो जो केस रे सेटा चेक करिया दरकार नाही कारण ऑब्वियस केस हो सपोज तमे नेलो देखु ना निजे एग्जांपल नियो 4 4 संगे रे 4 6 नेलो मु टेस्ट करो ताले यार फर्स्ट ऑर्डर हला यार सेकंड ऑर्डर हला 4 यार फर्स्ट ऑर्डर हला 4 ओमिट कर दियो ताले रोइला कोन हम पगरे यार फर्स्ट ऑर्डर 4 तार सेकंड ऑर्डर 6 4 6 होला 4 6 ये नीचे ही गल नीचे ही जिवो तेनु 4 4 6 6 8 8 पई टेस्ट करिया आवश्यक नाही हम 8 टेस्ट करिया 4 6 टेन ओके ताले अंकर टिक मार दउची अंकर टिक रे निश्चित सैटिस्फाई करियो 4 6 4 4 6 6 8 8 दिस आर ऑब्वियस केस आउ चेक करियो आवश्यक नाही अच्छा 80 बर्तन चेक करिया कोटी 4 6 रे नाउ विल राइट द 4 6 4 6 4 6 एलिमेंट रो सेकंड ऑर्डर टा किए देखो सेकंड ऑर्डर टा हला 6 बर्तन फर्स्ट ऑर्डर कोटी 6 अछि एगुडा नबा आवश्यक नाही जोडा 4 4 6 6 8 8 एगुडा नबा आवश्यक नाही आउ जो अदर एलिमेंट थियो सेगुडा नबा 4 6 संगे 6 4 अछि 6 8 अछि देखो 4 6 संगे टेस्ट करिया पे दीटा एलिमेंट अछि गोटे 6 4 गोटे 6 8 जो दीटा एलिमेंट रो फर्स्ट ऑर्डर होची 6 से पई से दीटा एलिमेंट नै कि टेस्ट करिया तो फर्स्ट नेली मु 6 4 दैट्स इंप्लाइज तो वर्तमान 6 6 यार सेकंड ऑर्डर फर्स्ट एलिमेंट रो सेकंड ऑर्डर सेकंड एलिमेंट रो फर्स्ट ऑर्डर सेम अछि ओमिट कर देली जोटा सेम थियो ओमिट कर दो तापर 4 4 देखो अछि ना नाही चेक करियो 4 4 ओमिट कर साला पर एठी 6 6 ओमिट हे गला रहिला हमर कोन 4 एठु रहिला कोन 4 whether belongs to R or not देखो 4 4 belongs to R एठी 4 4 अछि ओके तापर आ गोटे टेस्ट तार थिला 4 6 6 8 6 6 कैंसिल कर दो ओमिट कर दो रहिला पर कोन 4 8 ऑर्डर पे लिखो 4 8 4 8 whether belongs to R or not देखो 4 8 नहीं 4 8 is not there inside the set R so therefore this one is 4 8 does not belongs to R तले एटा कट हे गला तमने गोटे पई फेल्युअर हैला पने तमने तमे आउ टेस्ट करिया आवश्यक नहीं आउ टेस्ट करिया आवश्यक नहीं सेठी ही लिखि दो so R is not transitive R is not transitive now we'll take the equivalence relation you see equivalence relation that is 8 type of relation that is called equivalence relation equivalence now we'll define first that is a relation are said to be an equivalence relation if the relation R is reflexive symmetric and transitive okay तामने तीनटा को जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव as well as symmetric as well as transitive if the relation reflexive symmetric transitive then you can say the relation is equivalence relation okay now we'll take some example which is reflexive symmetric transitive you see तो देखो गोटे रिलेशन फॉर्मेशन हेची
1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 1 2 1 3 2 तो ये रिलेशन आम चेक करिया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखिल रिफ्लेक्सिव मु चेक करूची रिफ्लेक्सिव इज नॉट रिफ्लेक्सिव रो टेस्ट कौन थिला फॉर ऑल x belongs to a that implies xx belongs to r मन पड़ला समस्त एटा रिफ्लेक्सिव टेस्ट कथा मन पकाओ माने याकू ओडिया रे कहले केमती लागिवो ना ए रो प्रत्येक एलिमेंट पई जदी निज सहित निजर रिलेशन थिबा ऑर्डर पेयर आर सेट रे अछि ताले आर सेट को रिफ्लेक्सिव कहबो पूरा भलो से बुझी गलो फॉर ऑल एलिमेंट x belongs to a if xx order pair belongs to r then only r is reflexive so therefore इठी देखो 1 1 for each element कहूची प्रत्येक एलिमेंट पई देखिबो ताले एरो ताले 1 पई 1 1 order pair is there so here you see 1 1 2 element पई 2 2 is there yes 3 element पई whether 3 3 is there or not in the set r here yes is there so therefore it is reflexive ताले लिखि दबो पूरा डेफिनेशन टा लिखि दबो फॉर हियर लिखिबो हियर फॉर ईच और फॉर ऑल जहाँ लिखिले चले फॉर ईच x belongs to a that implies xx belongs to r लिखिबो ऑर्डर पेयर टा r रे थिबो आ एलिमेंट गुडा a रही थिबो होला so that implies r is reflexive ताले रिफ्लेक्सिव हे गला तापर सिमेट्रिक टेस्ट करिया सिमेट्रिक टेस्ट करछि देखो सिमेट्रिक रे मन पकाओ सिमेट्रिक रे कोन इफ xy ऑर्डर पेयर सेठी फॉर ईच फॉर ऑल लिखिबा दरकार नाही ओनली जो ऑर्डर पेयर थियो तार आर सेट रे जो ऑर्डर पेयर थियो तार उल्टाटा थियो इनवर्सटा थियो जो ऑर्डर पेयर थियो आर सेट रे xy belongs to r माने दैट इंप्लाइज जदी yx belongs to r हे गला दैट मींस r इज सिमेट्रिक एठी देखिलो जियो अछि तार उल्टा अछि ना नै आर सेट रे चेक करो 1 1 अछि ता उल्टा से निजे अछि 2 2 रो उल्टा के से निजे 3 3 रो इनवर्स 3 3 1 2 रो इनवर्स के 2 1 खोजो 2 1 अछि ना नै 2 1 हियर इज 2 1 ओके 2 3 रो इनवर्स खोजो 2 3 रो इनवर्स 2 3 रो 3 2 अछि ओके ताल 2 3 सैटिस्फाई कला 1 3 रो इनवर्स 3 1 एठी पाखरे अछि अच्छा 3 1 रो इनवर्स निजे 1 3 अछि 2 1 रो इनवर्स 1 2 अछि ताले 3 2 रो इनवर्स कोठी खोजो 2 3 अछि ताले समस्त इनवर्स अछि सो सिमेट्रिक ताले लिखि दो एठी हियर फॉर xy ऑर्डर पेयर belongs to r that implies yx order pair belongs to r so r is symmetric ट्रांजिटिव केस टा देखिबा ठीक है ट्रांजिटिव केस रे कोन होबा दरकार x y z नेले xy yz belongs to r एमती एलिमेंट दीटा टेस्ट पाई नबो xy yz belongs to r that implies xz belongs to r होथिले ताल ता कहबो ट्रांजिटिव ताल देखिलो एठी सेमतिया टेस्ट गोटे गोटे नबा अच्छा मु कोन कहिथिली 1 1 2 2 3 3 पई टेस्ट नबा आवश्यक नाही सेम एलिमेंट थिले टेस्ट नबा आवश्यक नाही अच्छा एठू टेस्ट नियो मुंह में कर दियो मुंह लेखुनी मुंह में कर दोछि देखो तुमे भी मुंह में कर परियो 1 2 रो सेकंड ऑर्डर के 2 फर्स्ट ऑर्डर की अछि 2 अछि एठी अछि टेस्ट कर दियो मुंह में करो 2 2 काट दियो 1 3 इज देयर ना नहीं यस ताल टेस्ट सरी गला पे 1 2 2 3 रो टेस्ट हला 1 2 पई पुणी नियो 2 कोठी अछि फर्स्ट ऑर्डर एठी अछि 2 1 ताले 1 2 पई 2 1 नलो 2 2 काट दलो 1 1 इज देयर यस आउ 1 2 पई टेस्ट नाही 1 2 रो सेकंड ऑर्डर टा 2 माने फर्स्ट ऑर्डर एठी अछि 2 फर्स्ट ऑर्डर एठी अछि 2 केवल दीटा से टेस्ट कर दलो ताले यार हेई गला ताले म एठी टिक मारली 1 2 रो टेस्ट हला तापर 2 3 रो टेस्ट करी मूवमेंट टेस्ट करी तापर टिक मारी अच्छा 2 3 रो सेकंड ऑर्डर के 3 फर्स्ट ऑर्डर कोड 3 अछि एठी अछि ताले 3 3 कैंसिल रहला कोन 2 1 अछि ना नहीं यस इज देयर ताले या पे टेस्ट हला तापर 2 3 रो देखो आउ कोठी फर्स्ट ऑर्डर 3 अछि एठी अछि 3 बुझि पाइल ताले 2 3 3 2 ताले 3 3 ओमिटेड 2 2 2 2 इज देयर ओके ताले 2 3 रो टेस्ट भी सरला दीटा टेस्ट थिला हम कर देलु सैटिस्फाई करूची अच्छा वर्तमान जीवा 1 3 रो टेस्ट करिया मूव में करो 1 3 रो सेकंड ऑर्डर के 3 फर्स्ट ऑर्डर 3 ताले 1 1 इज देयर सो 1 3 रो 3 1 से टेस्ट होला 1 3 रो संगे आ गोटे टेस्ट करिवा इठी अछि 3 2
ताले 3 3 कैंसिल 1 2 1 2 खोज अछि ना नहीं यस इज देयर 1 2 सो 1 3 रो टेस्ट भी सरला सो मु टिक मारदेल सैटिस्फाई कला अच्छा 3 1 रो टेस्ट देखो 3 1 रो टेस्ट देखो 3 1 सेकंड ऑर्डर के 1 ताले 1 कोठी अछि 1 एठी तीटा नहीं एठी अछि 1 3 1 1 3 1 1 कैंसिल हे गला रहला कोन 3 3 3 3 इज देयर अच्छा 3 1 संगे आउ के नबो एटा भी नबो 1 2 कारण यार सेकंड ऑर्डर हला 1 फर्स्ट ऑर्डर यार हला 1 ताले 3 1 1 2 3 2 3 2 के अछि यस ताले 3 1 रो टेस्ट भी सरला सैटिस्फाई कला दीटा टेस्ट थिला सबले टेस्ट खोजिबो 2 1 रो टेस्ट माने कोन यार सेकंड ऑर्डर एलिमेंट 1 अछि माने को एलिमेंट रो फर्स्ट ऑर्डर 1 खोजो को एलिमेंट रो फर्स्ट ऑर्डर हियर फर्स्ट ऑर्डर 1 अछि ताले 2 1 1 3 1 1 कटि गला 2 3 2 3 अछि ना नहीं यस 2 3 इज देयर ताले यार फर्स्ट टेस्टटा सरला आउ खोजो 2 1 संगे आउ कोठी 1 अछि हियर 1 अछि फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट 1 so 2 1 1 2 नलो 2 2 so 2 2 is there also so therefore 2 2 2 1 रो भी टेस्ट सरला इट्स सैटिस्फाइड तापर नियो 3 2 3 2 रो टेस्ट देखला 3 2 रे कोन अछि सेकंड ऑर्डर टा किए सेकंड ऑर्डर टा अछि 2 एठी अछि फर्स्ट ऑर्डर 2 ताले 3 2 2 1 नलो 3 1 इज देयर टेस्ट सरी गला ता पई आ गोटे देखो टेस्ट थिबो 3 2 2 3 नहीं कौन यार सेकंड ऑर्डर 2 यार फर्स्ट ऑर्डर 2 ताले 3 3 कटि गला परे 3 3 इज देयर ताले यार भी टेस्ट सरला ये भी ट्रांजिटिव सैटिस्फाई करछि ताले सब एलिमेंट सैटिस्फाई कला कहले सर आपण ए तीनटा काई चेक करलेनी ए तीनटा ऑब्वियस केस जहां संगे चेक करिवो सी निजे हिजो तेनु एटा चेक करबा आवश्यक हुए नाही ट्रांजिटिव केस रे हला तेनु टेस्ट सरी गला ताले एठी लिखि दो ट्रांजिटिव हे गला सो लेखो फॉर all x y y z belongs to R that implies xz belongs to R hela nahi kon if xy yz belongs to R then xz belongs to R that means what R is transitive so R is transitive here you see R is reflexive here symmetric here transitive that means all the relations satisfied by the relation R isn't it so R is equivalence relation you can write here hence R is an equivalence relation ये टेस्ट पढ़ुची 4 मार्क्स पढ़ुची equivalence relation ओके एई बली बहुत गुडे एग्जांपल दे दोची तुम माने घर बसी करिवो जदी किछि डाउट हला पचारिवो दैट मींस टेस्ट द रिलेशन आर वेदर इक्विवेलेंस और नॉट तो एई बली रिलेशन थिबा एक्सरसाइज रे भी बहुत गुडे प्रॉब्लम अछि जो गुडा की टेस्ट करिवो आर इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव करिया को अछि बहुत गुडे प्रॉब्लम तो नेक्स्ट एपिसोड रे हमें एक्सरसाइज रो प्रॉब्लम करिवा रिलेटेड इक्विवेलेंस रिलेशन सो अंटिल देन गुड बाय थैंक यू